Jammu and Kashmir is likely to get around 25 lakh additional voters after the special summary revision of the electoral rolls since the abrogation of Article 370 in 2019, where also J&K from a state was turned into a union territory, thereby meaning that all laws applicable to Indian citizens across the country, irrespective of caste, creed, religion, and specifically with regard to voting rights, will now also be allowed for those living in Jammu and Kashmir. But this announcement by the Chief Electoral Officer drew an angry reaction from former Chief Ministers Omar Abdullah and Mehbooba Mufti. They are attacking the government at the centre now. What exactly is the political outrage about? Take a look at this report. In Naya Jammu and Kashmir, new voting rights now for all. In a major decision announced, approximately 25 lakh new voters will now possibly be added to Jammu and Kashmir voter list. This comes after J&K's Chief Electoral Officer announced that any Indian citizen, including non-locals living or working in Jammu and Kashmir, can now enlist their names in the voting list and also will be eligible to cast vote in the assembly and local body elections in the Union Territory. Hirdesh Kumar has announced that non-locals, including employees, students, labourers from outside who are staying ordinarily in Jammu and Kashmir can register their names in the voting list. Even marginalized communities now, like the Valmiki Dalits, West Pakistani refugees, despite living in J&K since more than 3 decades, had no rights, are now eligible to vote. Also, armed forces personnel posted in peace stations can also get their names added in the list. Even non-domicile holders are now eligible. Of 370. उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे भाई बहन जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में आके रह रहे हैं, उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था और हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत के जो भी जनता है उनको मताधिकार होना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर में पिछले 50 साल से 60 साल से 10 साल से 20 साल से वो रह रहे थे, यहाँ पे उनको अधिकार क्यों नहीं था? ये जो यूटी में आने के बाद ये जो फैसला लिया है हमारी केंद्र सरकार ने और हमारी यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट ने, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। However, this announcement has irked the opposition parties. Former Chief Minister Omar Abdullah lashed at the BJP, calling the party insecure about support from genuine voters of Jammu and Kashmir for next elections. While PDP chief and former Chief Minister Mehbooba Mufti claimed this is the last nail in the coffin of democracy. किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं। मुल्क में वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं, और जम्मू में जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं। It's not about legality or illegality about it. It's more about the intention behind it. 25 लाख वोटर्स की एंट्री यहाँ पे करवाने जा रहे हैं और लोग महसूस करते हैं कि भाजपा क्योंकि जनाधार जम्मू कश्मीर में खो चुकी है, चुनाव से भाग रही है और इंपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। पोस्टल बैलेट तो हमेशा ऑप्शन है, पोस्टल बैलेट वाले कहीं पे भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल सकते हैं। लीगली जो एंटाइटलमेंट जिसकी होगी वोटर्स की, वो डिबेटेबल इशू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की ऑलरेडी कांग्रेस ने कहा कि हमें रियासत का दर्जा दो। लोकल लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करने के लिए भाजपा ने ये हथकंडे अपनाए हैं, जिसका हम विरोध करेंगे। However, being cautious of immediate outrage, to strategize further, National Conference Chief Farooq Abdullah has now called for an all-party meeting on Monday to discuss the recent announcement. The Bharatiya Janata Party, meanwhile, has lashed out at the Kashmir-centric political parties. हम जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं पूरे भारत में, तो कहीं भी हमारा वोट बनता है। हमारे छात्र छात्राओं का, हमारे जो सर्विस करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उनका वोट बनता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ये इनके सपने में आज भी धारा 370 आती है जो टूट चुकी है। यहाँ
हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है, उसको वोट का अधिकार क्यों ना हो। सवाल तो इनसे होना चाहिए कि आपने 70 साल उन लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिए। जब ये इस सवाल का जवाब देंगे उसके बाद हम भी टिप्पणी करेंगे। When Article 370 was abrogated on 5th August 2019 and Jammu and Kashmir was turned from a state into a union territory, all central laws automatically were brought into J&K as well, where now all Indian registered citizens are considered equal and eligible to vote and contest in this mega electoral democracy. With Sunil Ji Bhatt and Pooja Shali, Bureau Report, India Today.